Hi everyone, welcome to my channel Commerce Made Fun, and today, as promised earlier, we'll be talking about properties of PPC. For those of you who don't know what PPC is, kindly check out my other video. Now guys, when we talk about the properties of PPC, two things come to our mind. First, it is downward sloping, and second, it is concave to the origin. So let's talk about both of them one by one. Okay. Now, downward sloping. If we revisit the PPC, तो हमने क्या बात करी थी? We have y-axis, origin, x-axis. One good is taken on the y-axis. One good is taken on the x-axis. We can take rice and rifles as our examples. Now, जब हमने PPC बनाया था, तो it was like this: A, B, right? Now, what the points on, inside and over the PPC mean, ये सब तो हम पहले ही कवर कर चुके हैं. अब जरा शेप के बारे में देखते हैं. As soon as we are increasing the quantity of good X, what is happening? Good Y की quantity decrease हो रही है. So that means as हम good X की quantity में towards the right जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा left to right movement हो रहा है on the X axis, then this curve is coming down. Now this exactly is the meaning of downward sloping, and what is the reason behind it? The reason behind the first property is inverse relationship between what? Between the production of good X and between the production of good Y. Now if we recall, we said that in an economy, resources and technology are fixed. तो जब रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी उतने ही हैं और उसके अंदर हम गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें गुड वाई को कम करना पड़ेगा. अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं जहां हम लोग ओ ए क्वांटिटी राइस की बना रहे हैं, तो उस टाइम हम राइफल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे. बट जैसे जैसे हम राइफल्स की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमें राइस की प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा. वाई? बिकॉज विद द सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम दोनों की क्वांटिटी को बढ़ाएं. दोनों की क्वांटिटी तब बढ़ सकती है जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी बेटर हो जाए, बट दैट इज अ सेपरेट इशू. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जब हमारे पास गिवन चीजें हैं तो उसके अंदर हम प्रोडक्शन को कैसे कर सकते. सो नाउ फर्स्ट इज इनवर्स रिलेशनशिप इज द रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्केव टू द ओरिजिन. क्लास 10 में गए थे ना, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस. यहाँ पे हम लेंस को तो भूल जाते हैं, बट उसकी शेप को थोड़ा सा ध्यान रखते हैं. माइक्रो इको में एक सिंपल सी चीज याद रखते हैं. Whenever the slope of a curve is increasing, the curve will be concave in shape. Whenever the slope is constant, the curve will be a straight line. And whenever the slope is decreasing, shape हो जाएगी convex. तो अब इसका मीनिंग क्या है? Slope का मतलब होता है how much is the curve going down or up due to a change. तो मतलब हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये बात करी कि गुड एक्स बढ़ाएंगे तो गुड वाई कम करना पड़ेगा, पर जब गुड एक्स बढ़ाएंगे तो गुड वाई को कितनी क्वांटिटी से कम करना पड़ेगा, that tells us about the slope. Now, यहाँ पर it is concave, and I just mentioned concave is because of increasing slope. अब increasing slope, ये slope क्या है इसका? The slope of PPC is known as MRT or marginal rate of transformation. It just means कि for producing one additional unit of good X, how many units of good Y will we have to sacrifice?
इम्प्लाइंग जब हमने बोला कि गुड एक्स हम इंक्रीज करेंगे तो गुड वाई डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एज आई मेंशन अर्लियर, गुड एक्स की क्वांटिटी अगर मैं 1 यूनिट से बढ़ाऊं तो गुड वाई के कितने यूनिट्स मुझे सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे? दैट इज एमआरटी। एमआरटी का फॉर्मूला क्या होता है? एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा गुड 1 अपॉन डेल्टा गुड 2, और वी कैन से the sacrifice in good 1 upon gain of good 2। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि if you are increasing the production of rifles, the production of rice would decrease, that is point number 1, downward sloping. But as you increase rifles by 1 unit, how much quantity of rice would decrease? That will tell us about MRT. MRT जो है वो क्वांटिटी है और उसी की वजह से ये शेप आती है कॉनकेव। तो जरा ध्यान से सोचते हैं। आपको मैंने ये बता दिया कॉनकेव तब होती है जब स्लोप इंक्रीजिंग होता है। मैंने आपको बता दिया स्लोप ऑफ पीपीसी MRT होता है। तो इसका क्या मतलब बना? MRT इंक्रीजिंग होता होगा तभी तो कॉनकेव शेप आएगी। सो अभी MRT इंक्रीज क्यों करता है इसके बारे में भी सोच लेते हैं। Now I'll give you a very simple example because as you know boring एग्जाम्पल्स देंगे तो फिर वो याद होने में तो डिफिकल्ट हो जाता है। सो नॉर्मल एग्जाम्पल एक छोटा सा लेते हैं। मान लो आई हैव विद मी अ टोटल ऑफ 6 स्टूडेंट्स। आउट ऑफ दिस 6, 1 is a science student, 2 are commerce students, and 3 are art students, humanities. Now, all 6 of them have economics as a subject. So, अगर मान लो हमारे पास में जो commodities produce होनी है वो है economics के projects and physics के projects. Now, just rake your brains and tell me, इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये सारे के सारे अपने अपने आप इंडिविजुअली बना सकते हैं या नहीं? Obviously yes. So that means that if I let all 6 of them make economics project and all 6 of them are studying economics, all 6 of them are interested in economics, then maybe जो इको के प्रोजेक्ट्स हैं वो मेरे पास 6 आ जाएंगे। बट उस टाइम पे होगा क्या? If everybody is making eco projects तो फिजिक्स के प्रोजेक्ट कितने हो गए? 0। Now let's say कि मैं चाहती हूँ कि फिजिक्स का भी एक प्रोजेक्ट बने। तो अगर फिजिक्स का मैं पहला प्रोजेक्ट बनवाना चाहूँगी, so what is the obvious choice? Who will I divert or sacrifice from eco to make the physics project? Obviously the one who has science as a subject. He is studying physics, तो उसको पता है फिजिक्स का प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, तो उसको मैंने यहाँ से सैक्रिफाइस किया, इको मेरा एक कम हो गया और फिजिक्स का मेरा एक प्रोजेक्ट बन गया। Why? Because one resource has been transferred from economics to physics. Now यहाँ पर 1:1. So MRT इस टाइम पे क्या हुआ? 1:1. Now let's talk about कि अब अगर मुझे सेकेंड प्रोजेक्ट बनवाना है फिजिक्स का, अब क्या होगा? अब जब मुझे यहाँ पे सेकेंड करना है and if I sacrifice one more person, let us say out of these जो कॉमर्स वाले 2 हैं, they were of the kind कि हमें साइंस लेनी थी, हमें कॉमर्स लेते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है साइंस में। बट आर दे स्टडिंग साइंस इन 11th? नो। डू दे नो एनीथिंग अबाउट फिजिक्स ऑफ 11th? नो। सो एट दिस टाइम मे बी दे से कि हम दोनों मिलके बना सकते, दैट इज both of them together can make one project of physics by making the necessary research. So now what is happening? That these resources who were making individual projects in eco are not equally efficient in making the project of physics. तो अब मुझे यहाँ क्या करना पड़ा? फिजिक्स के एक और प्रोजेक्ट लेने के लिए मे बी मुझे इको के 2 बच्चों को सैक्रिफाइस करना पड़ा, मतलब the MRT becomes 2:1. Third, if I want to make another project in physics, एक और से इंक्रीज करना है, तो मे बी आर्ट्स वाले कहते हैं कि इंडिविजुअली तो हम नहीं कर सकते, हमें इंटरेस्ट नहीं है फिजिक्स में, बट इफ ऑल 3 of us are given the task together, we can do it. Again, efficiency वहाँ पर 3 लोग 3 प्रोजेक्ट बना रहे थे, बट अगर मैंने उनको फिजिक्स में डाल दिया जिसमें वो एफिशिएंट नहीं है, तो वो
तीन मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे. So now my eco projects will come down to 0 and my physics project will increase by 1 more level. So what are we seeing by the MRT? First it was 1:1, then it became 2:1, then it became 3:1. That means as more and more units of physics are being produced, economic sacrifice is increasing. Now ये छोटा सा एग्जाम्पल पूरी इकोनॉमी में चलता है. आप इको और फिजिक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो राइज और राइफल्स से और आपके पास में पीवी शेड्यूल तैयार हो गया. Why? Because the criteria is exactly the same. जो राइस बनाते हैं वो राइफल्स में उतने एफिशिएंट नहीं है, जो राइफल्स बनाते हैं वो राइस में उतने एफिशिएंट नहीं है. When you sacrifice or when you transfer resources from one product to another, उनकी एफिशिएंसी में डिक्लाइन आता है and most goods have to be sacrificed for the first commodity. So guys, these were the two properties of in PPC. Next class we'll be talking about the shift of PPC, जहाँ हम बात करेंगे जब resources बढ़ते हैं या कम होते हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है या ऑब्सोलीट होती है. So what are the changes that come to the PPC? For all the latest topics, pointers, tips, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं उनको प्लीज़ गो थ्रू करिए. आपको बहुत हेल्प होगी आगे माइक्रो के सिलेबस.